Hello everyone, my name is Akhil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about a very interesting topic, that is structure of plasma membrane, which is also known as cell membrane. Students, let's begin. Students, if we look at the structure of animal cell and the organelles that are present inside the animal cell, each and every part here is covered by its own membrane, okay, or else we can also say specialized membrane, right? Students, membrane will be acting as a protective covering here, right? And it will also be separating out the extracellular component from the intracellular component, right? And it will also be responsible for the exchange of substances. Why? Because the transportation of substances, that is all happening across the cell membrane, it all takes place through this cell membrane or plasma membrane, राइट सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो भी बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ जो भी होगा वो किसके मदद से होगा, कौन से दूसरे कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसे इसमें रेस्पॉन्सिबल रहेगा बोल के हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक. Students, structure of plasma membrane can also be asked as fluid mosaic model or structure of cell membrane. For all these questions, the answer will be same, students. Okay, so before you start writing your answer, first you need to draw the diagram of cell membrane or plasma membrane, students. Okay, yes. The plasma membrane or cell membrane is a dynamic fluid boundary that separates the cell's interior from the external environment. Students, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेपरेटर की तरह काम करेगा एक सेल के लिए, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को और इंट्रासेलुलर स्पेस में सेपरेशन बना के रखेगा, जिसके वजह से सेल के अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा. स्टूडेंट्स, ओके, यस. Now we'll discuss the structure of plasma membrane. Students, remember the structure of plasma membrane is mainly or primarily made up of three main components. The first one is lipids, second one are the proteins, third one are the carbohydrates. Okay, so students, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्री मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. पहला होता है लिपिड्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच कंपोनेंट इन डिटेल. ओके, यस. Students, the first component is lipids. In lipids, there are again two types, phospholipid bilayer and cholesterol. Students, remember, lipids are fat soluble substances. They are not water soluble substances. Okay, they will not allow the water soluble substances to pass through them. Okay, स्टूडेंट्स, पहला कंपोनेंट लिपिड्स होगा, जिनमें फिर से दो टाइप होंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और कोलेस्ट्रॉल. ओके, ये फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस रहेंगे लिपिड्स, ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को पास नहीं होने देंगे स्टूडेंट्स इनके थ्रू. ओके, यस. The first component is phospholipid bilayer. It is the fundamental structure, that is a double layer of phospholipid, student. Okay, as you can see here in the diagram. Okay, here we have got the basic structure of the plasma membrane. As you can see here we have got a bilayer, students. Here we have got one layer and second layer, that is bilayer. Okay, and what kind of bilayer it is? It is phospholipid bilayer, students. Why we are calling it as phospholipid bilayer? Because as you can see here we have got a ball like head and tail like structure here, which have combined together here. Okay, this ball like head is nothing but phosphate molecule which is negatively charged, and this tail like structure that is attached to it, that is fat molecule, students. So it is a lipid here, so which is why we are calling it as phospholipid. Okay, phosphate plus lipid, that will give you phospholipid. So this is all made up of phospholipid, students. Okay, so which is why this is phospholipid bilayer. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है. इसमें आप लोगों को देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक बाई लेयर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स. यहाँ पे ऊपर एक लेयर है और नीचे एक लेयर रहेगा, जो कि यहाँ पे एक बॉल लाइक हेड है और एक टेल लाइक इसको
स्ट्रक्चर अटैच हुआ है स्टूडेंट्स। ये बॉल लाइक जो हेड है यहाँ पे ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहेगा जो कि एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, और एक लिपिड जो इसको अटैच हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ, ओके, जिसकी वजह से इसको फॉस्फेट प्लस लिपिड एक साथ मौजूद है, इसकी वजह से इसको फॉस्फोलिपिड करके बुलाएंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड से बना है जिसकी वजह से इसको हम फॉस्फोलिपिड बाई लेयर करके बुला रहे हैं स्टूडेंट्स। बाई लेयर मतलब डबल मेम्ब्रेन, ओके, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? यस, so now we'll move further. Each phospholipid molecule is having a hydrophilic, that is water loving phosphate head facing the aqueous environment, cytoplasm and extracellular fluid, and two hydrophobic, that is water fearing fatty acid tails facing each other in the membrane's core. Students, as you can see here, there is a one more diagram of plasma membrane in which, as you can see here, we have got the phospholipid layer in which we have got the phosphate heads here and fatty acid tails here. Students, these phosphate heads will be water loving in nature and these fatty acid tails will be water hating in nature. Okay, these phosphate heads will combine with water very easily, but these water hating fatty acid tails will not allow the water molecules to get into this layer, student. Okay, so because they are water hating in nature, the best example can be a glass of water. If you take a glass of water, if you try to mix oil into it, they will not get mixed into it, right? Because they hate each other, right? The same thing apply here, apply the same thing here. These fatty acid layer will not allow the water molecules or the electrolytes, because the electrolytes, even the electrolytes are also water soluble substances, so they will not allow these substances to pass through them, students. Okay, so how can these water molecules and electrolytes then pass through them? Because it is necessary for the cells to receive water and electrolytes into this intracellular structure, right? So there is a way for this one, we'll discuss this further now. Okay students, as you can see here, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये जो फॉस्फेट हेड रहेगा स्टूडेंट्स, ये वाटर लविंग रहेगा नेचर में, ओके, वाटर लविंग रहेगा नेचर में। बट जो यहाँ पे जो फैटी एसिड के जो टेल्स प्रेजेंट है, जो कि लिपिड टेल्स है यहाँ पे, ये वाटर हेटिंग रहेंगे स्टूडेंट्स नेचर में। ओके, ये वाटर सब्सटेंसेस को या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास होने नहीं देंगे इनके थ्रू। ओके, वो चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स रहे या कोई वाटर सब्सटेंसेस रहे, वो यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर सब्सटेंसेस यहाँ बाहर से अगर अंदर पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको अंदर जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए, राइट? यस, विल डिस्कस दिस फर्दर नाउ। ओके, the second component is cholesterol. In animal cells, cholesterol molecules are interspersed among the phospholipid tails. Cholesterol helps maintain the optimal membrane fluidity by preventing excessive hardening at low temperatures and preventing excessive melting at high temperatures. Students, here as you can see, in between these tails, here we have got some structures. These are nothing but cholesterol, students. These are all cholesterol. In this image, as you can see here, red like structures are present. These all are cholesterol, students. Okay, इनका काम क्या रहेगा यहाँ पे? ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखेंगे स्टूडेंट्स। जब भी यहाँ पे कोई लो टेम्परेचर होगा, उस लो टेम्परेचर की वजह से अगर ये सेल मेम्ब्रेन हार्डन होने लगा, ओके, तो ये हार्डनिंग को रोक के रखेंगे, ये हार्डन नहीं होने देंगे, इसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखेंगे। उसी तरह अगर यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हीट होने लग गया, उस हीट की वजह से अगर ये सेल मेम्ब्रेन अगर मेल्ट होने का चांस रहा, तो ये उसी वक्त भी ये फ्लूइडिटी बना के रखेंगे, इसको मेल्ट नहीं होने देंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन रहेगा यहाँ पे। ओके, यस। The next component is proteins, student. Okay, various proteins are embedded in or attached to the lipid bilayer, giving it a mosaic appearance. These include integral proteins and peripheral proteins. Students, in proteins again we have got two types of proteins here, integral proteins and peripheral proteins. स्टूडेंट्स, द सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे प्रोटीन्स रहेगा, ओके, जिसके अंदर फिर से दो टाइप के प्रोटीन आएंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स फुल्ली स्पैन द मेम्ब्रेन, एक्टिंग एज चैनल्स और कैरियर्स फॉर द प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट. Peripheral proteins located loosely on the inner or outer surface, often involved in cell signaling or providing structural support.
Students, as you can see here in the diagram, here we have got channels here. Okay, here as you can see, here we have got channels, the protein channels. The here are they, and here also, here and here, or here as you can see, there is presence of proteins. Okay, these are nothing but integral proteins, and these are peripheral protein, students. Okay, so the molecules, the water molecules, or the large or the charged particles, or the large particles which are unable to pass through this layer because of these fatty acid tails, it is unable to pass it is unable for them to pass through this layer. So what these substances will do, they will take help of these channels, students. They will take help of these channels to pass through them. Okay, to come into the cell or out of this cell, they will take help of these channels. Okay students, जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो चाहे वाटर रहने दो या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स रहे, कोई लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स या कोई चार्ज पार्टिकल्स रहे, जो भी मॉलिक्यूल्स जिनको यहाँ पे इन फैटी एसिड लेयर के जरिए जो पास होने के लिए जिनको मुश्किल है, जो बाहर से अंदर आना चाहते हैं या अंदर से बाहर जाना चाहते हैं, उनको यहाँ से पास होना मुश्किल है या पॉसिबल ही नहीं है, वैसे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये चैनल का हेल्प लेंगे स्टूडेंट्स। ये प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन का चैनल का हेल्प लेंगे, इसके जरिए इजीली अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर आएंगे स्टूडेंट्स। सो ये प्रोटीन्स का काम होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटीन्स का फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, so these are the protein, students, right? The last component is carbohydrate, students. Carbohydrates, short chains of carbohydrates, these are nothing but sugars or glucose molecules that are found only on the outer surface of the plasma membrane. They are attached to lipids forming glycolipids or to proteins forming glycoproteins. These form the glycocalyx, which is vital for cell to cell recognition, adhesion, and acting as a receptor, students. As you can see here we have got these again we have got some structures here. These are nothing but carbohydrate structure or glucose molecules, students. Okay, these glucose molecules, if they are attached with the phosphate head, students, if these glucose molecules, if they are attached with this phospholipid head, then we will call them as glycolipid. If these are attached with these protein molecules, okay, then we will call them as glycoprotein. Okay students, यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। अगर ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स अगर ये फॉस्फोलिपिड हेड के साथ अटैच रहेंगे तो इनको हम ग्लाइकोलिपिड बुलाएंगे। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर ये प्रोटीन्स के साथ अटैच रहेंगे तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन करके बुलाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो इनका काम क्या रहेगा, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स नाम का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जो कि सेल सिग्नलिंग के लिए हेल्प करेगा, एडेशन के लिए हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। ओके, और एक रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करेगा स्टूडेंट्स। Okay, so this is all about the plasma membrane structure, students, and the function and the structure of the plasma membrane, students. Okay, so if you have any doubts or any questions regarding this topic, students, you can put it in the comment section. Okay, so please share this video with your other friends as well who have not subscribed to my channel yet. If you are new to this channel, please subscribe to my channel. Okay, yes students, we'll meet again in the next video with more exciting topics. Till then, keep watching my videos. Okay, stay safe, keep learning, keep sharing. Thank you students.